A very warm welcome to an actor we all love. We all love him for his comic timing. और काफी लोगों उसकी कॉमेडी इतनी अच्छी है कि काफी लोग ये याद नहीं करते कि उन्होंने काफी हार्ड हिटिंग फिल्म्स भी की है, खाकी जैसे, जो मेरे उनके फेवरेट फिल्मों में से एक है. And now he's the producer of one of probably this Diwali's most anticipated film, Laxmmi Bomb. A warm welcome to you, Tushar. Great to have you on Bollywood Live. Yeah, great to meet you, Russell. Same. Great to meet you, and your team members have worked with me since I feel so old now because I'm talking to the next generation, and I worked with the previous generation in your office. Yeah. Yes, from a very long time. So good to speak to you, and thank you for talking such good things about Laxmmi Bomb. Yes, it is a big one for this Diwali, and it's coming in a way wherein I'm keeping my fingers crossed. Even more people can watch it, than what would have watched it. Yes. Than those who have watched it. Yeah. True. And like you said, I mean, I'm the second generation of Bollywood Live. That's a nice way. I've also not thought about it till date like that way. So it goes to show something about your longevity also, Tushar, that right from Mujhe Kuch Kehna Hai till now, so many people have watched you, so many people remember you, so many people still talk to you about those films. There's something about your longevity. What does it take to have that kind of longevity? It just doesn't really need some kind of rocket science. I won't say that. For sure, I'll say this, that you have to keep persevering and you have to ignore what needs to be ignored. वरना यहाँ पर आपको नीचे खींचने वाले बहुत होंगे, बहुत मिलेंगे, लेकिन काम करते रहना चाहिए. आपके प्रोफेशन में भी, मेरे प्रोफेशन में भी पॉजिटिव नेगेटिव हर मोड़ पे मिलते रहेंगे, लेकिन आपको हर चीज, हर चैलेंज को फेस करते हुए आगे बढ़ना है. और कितना भी बॉलीवुड के बारे में मतलब लोग सोचते हैं कि बहुत मुश्किल है, बहुत मतलब कि वेट करना पड़ता है, बहुत पॉलिटिक्स है वगैरह वगैरह. मैं मानता हूं कि मेहनत का फल चाहे अभी मिले या बाद में मिले, मिलता जरूर है. You have to be a little patient, and that is the key to longevity is your patience also. You can't, मतलब मंदिर का हलवा नहीं है जो आप आज मेहनत करो कल मिल जाएगा, So that attitude is very, very important. I'm grateful that people appreciate the longevity, and thanks to satellite TV and thanks to so many means or modes of entertainment that जो पहले की फिल्में, चाहे वो मुझे कुछ कहना है हो या गोलमाल 1 हो, वो आई थिंक लोग नए जनरेशन के लोग भी देख सकते हैं on television, on the net. So even newer audiences are watching my films, which I think adds to the longevity. True. As a producer now, अगर बात करें, would you say कि as a producer ये आपकी शायद सबसे safe bet होगी, क्योंकि आपके पास इतने बड़े सुपरस्टार है, इतनी अच्छी रीमेक है जो कि साउथ में वो एक ट्रिलॉजी बनके इतनी लंबी चली है, एंड एट द सेम टाइम काफी लव्ड फिल्म है. बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ नहीं चली है, लेकिन टीवी पे रीरन काफी अच्छी थी, और एक स्टोरी है और एक प्रॉपर फैमिली है. तो एक प्रोड्यूसर के नाते शायद आपको इस फिल्म को लेके कोई टेंशन नहीं है? ऐसा नहीं है. ऑफ कोर्स सब्जेक्ट को लेकर कोई टेंशन तो नहीं थी, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ही बढ़िया था, लेकिन उसको भी अडैप्ट करना, अक्षय सर को मतलब कन्विंस करना कि जो हम लिखने वाले हैं अभी वो हिंदी के लायक है. सो ऑल दैट इज अ चैलेंज. फिल्म बनाना, चाहे रीमेक बना रहे हो या ओरिजिनल फिल्म बना रहे हो, इजी नहीं होता. इस फिल्म को तो काफी टाइम लगा है सेटअप करने में, और फिर उसके बाद उसकी शूटिंग शुरू होने में, और अभी कोविड भी आया बीच में, तो इट्स हैड इट्स शेयर ऑफ चैलेंजेस. फिर भी आई थिंक जो मिला है हमें इवेंचुअली बहुत ही बढ़िया मिला है. दिवाली मिल रहा है हमें, और कोई और बड़ी फिल्म आई नहीं है इस साल सिंस मार्च, एंड अक्षय सर की पहली फिल्म होगी इस साल. सो ट्रेलर भी चला है, तो like I said, if you're patient, there is always some sort of a reward for your hard work. I hope I'm right with this film, but it's not been easy. You can't say that. Yes, the subject came easily, but after that, everything has been a process which will be worth it. I'm keeping my fingers crossed for that. काफी अजीब लगता है ना कहते हुए कि इस साल अक्षय की सर की सबसे पहली फिल्म होगी, बिकॉज वी आर सो यूज्ड टू इट कि एक साल में हर 3 महीने अक्षय कुमार की एक फिल्म तो आती है. तो yes. काफी डिफरेंट बात है, ये काफी डिफरेंट बात है. सो
इस पे कुछ चर्चा हुई थी अक्षय सर के साथ कि क्योंकि पहली फिल्म आने वाली उनका ये सब, तो धमाका होना तो जरूरी है। अम, ऐसा कोई डिस्कशन तो नहीं हुआ। आप तो जानते ही हैं कि आज हम लोग घर पर बैठकर ये इंटरव्यू कर रहे हैं, इसकी भी कोई एक वजह ही है। कोई डिस्कशन होकर करके हमने प्लान नहीं किया कि हम ऐसे बैठकर इंटरव्यू करेंगे। जो चल रहा है, मतलब कि जिस तरीके से पिछले 7-8 महीने गुजरे हैं, वो किसी के हाथ में था नहीं। चाहे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट क्यों ना हो, किसी के हाथ में नहीं था। So we have all made the most of whatever the circumstances have been, and given all the circumstances, we've done the best that we could for Laxmmi Bomb, and I'm very grateful to God and अक्षय सर, मतलब कि उनकी हर साल 3 फिल्में तो लगती ही हैं, लेकिन चाहे इस साल ना हो, अगले साल तो आ ही जाएंगी 3 फिल्में, आई एम श्योर। एंड ही इज लाइक वन ऑफ द लेजेंड्स, he's like one of the legends of Bollywood who have done 200 films and 300 films, जो like Dharam ji ho या Amit ji ho, he's like one of those legends. So जितेंद्र जी। that, yes, of course, like they've really created a lot of output. Their output has been very, very huge, and the love that they get from their fans. So yes, people are waiting for Akshay sir's the next film, and I'm very proud to say that that will be Laxmmi Bomb. अच्छा, तो मैंने कांचना ट्रिलॉजी आई सीन इट एंड ऑब्वियसली बढ़िया बहुत अच्छी फिल्म है कांचना ट्रिलॉजी। इसको अडेप्ट करते हुए फॉर हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस आपने कुछ चेंजेस की कि बिकॉज इट इज सो नाइस आपको सिर्फ ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं देखा? We didn't really fidget with the soul of the film and the original grammar of the film. It's a very commercial film, a very desi film which will appeal to a wide audience, not just multiplex audience or single screen audience. Everybody will like it, like they have liked the original Kanchana also. I think even when I go to places like my son's school, the teacher that told me that we've seen Kanchana on TV and it's a wonderful film, blah blah blah. So it's a film that has broken those barriers कि ऐसी टाइप की ऑडियंस या वैसी टाइप की ऑडियंस, तो उसको ज्यादा छेड़ने की जरूरत पड़ी नहीं और ज्यादा हमने छेड़ा है भी नहीं. The director, he's the captain of the ship, and we gave him this film to adapt to Hindi, and he has changed whatever needed to be changed. Of course, that was a 2011 film. This is a 2020 film. So, given that aspect of it and the fact that it's going to be made in Hindi, of course, few things were tweaked. I can say packaging थोड़ा change किया गया, क्योंकि हिंदी फिल्म का पैकेजिंग जो अलग ही होती है, जो आपको ट्रेलर से भी नजर आया होगा कि जो फिल्म की माउंटिंग है, बुर्ज खलीफा गाना है, all that is very different, of course, from the original. But the soul of the film, the grammar of the film, the energy of the film, that we haven't shadowed that. And the USP of the film, which is Lakshmi, yes, of course, that is there in the original and that is there here also. Okay, Akshay Kumar, the co-star, अपने as I said, one legendary film, Khakee. According to me, probably Akshay sir's, yours, both your best film, Khakee, or Akshay Kumar as actor to you as the producer. Which do you prefer? He's a professional of the kind that वो किसी भी सेट पे हो, किसी भी दौर में हो, चाहे वो 2003 की खाकी की शूटिंग हो या 2019 लक्ष्मी बॉम्ब की शूटिंग हो, टाइम लैप्स से उनका नेचर चेंज नहीं होता है. He is the same. He is the same on the sets of Khaki as he was then. And after so many years and so many hits and so many milestones and so many awards, he has not changed one bit. He is very clear. This is work, and what he is as a person doesn't need to change depending on what he is doing as far as his work is concerned. And that clarity, that mental strength, उनका जो mental strength है वो बहुत strong है. And I think youngsters should, he's the lesson for youngsters, who are coming into the industry, how to stay fit mentally, physically, how to treat your work with the right attitude, not get carried away by it, and not take success and failure too seriously. He's like that. So you will not see वो time lapse का कोई issue नहीं है उनके साथ, वो कोई change नहीं आया उनके अंदर. And we made a very memorable film together, Khaki, as you said. And I hope there has been a huge gap. We didn't work together. There was no film that we did together. And now we are coming back in a different way. I'm the producer and he's an actor, of course. And with Laxmmi Bomb. So I hope this one is also as memorable as Khaki. This one also, I think, as far as his role and his performance is concerned, इस फिल्म को तो लोग मुझे लगता है बहुत टाइम तक याद करेंगे.
I'm sure they would. Tushar, do you think that there's a slight difference between how the South audience sees their films as opposed to today's Bollywood audience? क्योंकि ये तो मुझे पूछना ही है आपसे क्योंकि आप प्रोड्यूसर हो। एक सिंपल सा वर्ड को लेकर, लक्ष्मी को लेकर इतना लोगों को गुस्सा है। When it is पहले बॉलीवुड में ऐसा नहीं होता था। दुर्गा भी नाम होता था आपकी पापा की फिल्मों में, सरस्वती नाम भी होता था एंड पीपल अंडरस्टूड ये कैरेक्टर है, इसमें किसी Yes. को कुछ हर्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्या बदल गया? व्हाई इज द बॉलीवुड ऑडियंस बिकम सो सेंसिटिव? और इसको लेकर क्या आप लोगों को कुछ टेंशन है? लक्ष्मी को लेकर क्यों लोग इतना बवाल कर रहे हैं? आई थिंक ऐसा नहीं है कि हमारी ऑडियंस ज्यादा सेंसिटिव हो गई है। आई थिंक कुछ लोगों को कहीं कोई डाउट अगर हुआ भी होगा तो आई थिंक उसे डायरेक्टर ने क्लैरिफाई कर दिया। आई थिंक ही गिव एन इंटरव्यू टू यू गाइस आल्सो, ही हैज स्पोकन टू अ लॉट ऑफ द media and cleared that the title has come from Kanchana, which means Lakshmi, and we could not call it Kanchana because यहाँ उसका meaning लोगों को शायद समझ में ना आए, तो we had to call it Lakshmi because it's a Hindi film, and then because it's a cracker of a character and a cracker of a film, जो लक्ष्मी character आप फिल्म में देखेंगे, yes, that's why we called it Laxmmi Bomb. And I ironically, it's releasing on Diwali. You know, हाँ Laxmmi Bomb is it's a Diwali word, yes so it's something that I think the director has clarified, and मैं बोलूँगा तो लगेगा कि मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, so it's not correct. So I लेकिन उस really बात भी लोग ये बॉयकॉट का ट्रेंड फिर भी चला रहे हैं। इट्स लाइक लोगों को सुनना नहीं है, कुछ लोग, लाइक यू सेड, कुछ लोग, नॉट बात फिल्म, कुछ लोग को सुनना। yes, I don't know how to react to that. I'm just focusing on the positive. I've we have obviously there's been such a great reaction to the trailer and great reaction to the song, और जो word of mouth barometer है उसी से पता चल जाता है कि कितना पसंद आया है लोगों को और क्या लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि नहीं सर के काम से, पिक्चर के ट्रेलर से, पिक्चर की जो एक जो हाइलाइट्स हैं ट्रेलर में, क्या लोग समझ रहे हैं, क्या लोग एंजॉय कर रहे हैं, वो तो पता चल ही जाता है थ्रू द वर्ड ऑफ माउथ. So I try not to focus on what is not really appropriate. और इस फिल्म के अलावा भी आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में इतना कुछ चल रहा है आज, कितना कुछ हम लोग मतलब वापस ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, whether it's in the industry also getting workers back to track, whether it's getting studios to work full time, whether it's about theaters reopening, or whether it's about everyone's salaries being paid to them, and everyone catching up to what they left off for so many months. To catch up to that requires a lot of work. तो अभी कहाँ टाइम है इन सब चीजों पर फोकस करने का? I think it's better we focus on getting the economy, as far as the industry at least is concerned. अपना घर संभालना मतलब मुश्किल हो रहा है, वो पहले संभालते हैं फिर देखते हैं बाद में. True. अच्छा, when you talk about this entire scenario, this entire setup of the film on OTT, तब एक टीम, एज अ टीम आप लोग को कितना कंफ्यूजन था अगर मैं रुकने की चाह थी, बिकॉज अभी रीओपन हो चुकी है धीरे धीरे काफी जगह पे, तो कभी आप ये सोचते हो कि अक्षय कुमार की फिल्म है और लक्ष्मी बॉम्ब जैसी बड़ी फैमिली फिल्म है, तो अगर ऑडियंस को वापस थिएटर में लाना हो तो इससे अच्छी फिल्म हो ही नहीं सकती है शायद, तो कभी ये सवाल आया मन में कि रुके थोड़ा थिएटर में आने का इंतजार करें? See, the situation that was there in March, April, and May was a very serious situation as far as the circumstances are concerned theatrically, and we didn't know when cinemas will open. We did not know when people will come back to cinemas after the cinemas open. Even now, the cinemas have not opened all over India yet. They are on the verge of opening. कब खुलेंगे, कब लोगों के अंदर वो मतलब कि एक फेथ आएगा कि हम सेफली जाके देख सकते हैं. आई थिंक इन सब चीजों का जवाब अभी भी नहीं है हमारे पास. तो उस वक्त आप समझ सकते हैं क्या मतलब गुजर रही होगी हम सबके साथ. We had to really plan very, very smartly, very plan very, very appropriately. So we, I think, did the right thing because फिल्म ज्यादा से ज्यादा लोग देखने चाहिए. The point is to get as many viewers as possible, to make it a huge success, to make people love the film. That is important. Now, what we could have done then, we have done, given what is available to us, and we are grateful that Hotstar is such a popular mass platform, thanks to the IPL and thanks to all the movies and all the content that it has produced in the last few years. So this is the ideal platform for Laxmmi Bomb on a festival like Diwali, and चाहे थिएटरों में ना लाए, लेकिन
हमारे टेलीविजन स्क्रीन, हमारे आईपैड्स और हमारे मोबाइल्स पर तो ऑडियंस, फिल्म ऑडियंस को वापस लेकर ही आएंगे, क्योंकि लोग वेट कर रहे हैं एक फैमिली एंटरटेनर का, एक Yeah. पॉजिटिव एंटरटेनमेंट का, एक मतलब जो आपको सीटी मारने पर मजबूर करने वाली जो फिल्म होती है, वो घर पे बैठकर लोग मजबूर हो जाएंगे सीटी मारने के लिए। आई होप यू नो ओटीटी सो पे इट इतनी बड़ी इट फिल्म इज नहीं आई है, ओटीटी पे इतनी बड़ी फिल्म कभी नहीं आई। yes, इतनी बड़ी फिल्म भी नहीं आई है। So I'm just keeping my fingers crossed that everything falls into place, that the way this film deserves, and obviously थिएटर में रिलीज करना सब पहले तो वही चाहते थे, एंड जब फ्यूचर में भी फिल्म बनेगी तो सबसे पहले थिएटरों में ही लोग जाकर देखेंगे, बिकॉज दे आर मेड फॉर थिएटर, फॉर सिनेमाज। बट दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस सिचुएशन व्हिच वी हैड टू रियली वर्क अराउंड। So I think we've done the best with that, and let's hope that the universe will work in our favor. Okay, Tushar, you grew up at a time in a household जहाँ पे आप you were very close to superstar. Okay, आपके जितेंद्र साहब की पिक्चर की फिल्में आपके पापा के, चाहे वो मवाली हो, हिम्मत वाला हो, तोहफा हो, राइट फ्रॉम फर्स्ट। You must have not been born also then. How old are you, if I may ask you? सर मैंने सब देख लिया, मैं मेरी पूरी फिल्मी फैमिली है, तो मेरे पापा ने मुझे दिखा दिया। Okay, because these are all the 80s, and I was growing up, so you must have grown up in the 90s. Yeah, I grew up in the 90s. तो सारी पहले वीडियो कैसेट्स रहता था हमारे घर पे। Yes, of course. अभी सारी ये डीवीडी थे हमारे घर पे, इनकी आपके पापा के डीवीडी से हमारे घर पे। How sweet. Yeah, I have grown up watching all those movies only. Yeah. In fact, the very first, if I'm not mistaken, जितेंद्र साहब की सबसे बड़े जो सुपरस्टार फिल्म रही है, जो made him a big star, was Purse, if I'm not wrong. Yes. So you have seen all that, and also you have been close to the industry. उनके साथ अमिताभ बच्चन के स्टारडम, धर्मेंद्र जी के स्टारडम आपने देखा है। अभी ट्रेड में इतना थोड़ी ऐसी बात है कि अगर इतने बड़े बड़े सुपरस्टार की फिल्में, ऑब्वियसली हालत कुछ और है, लेकिन अगर ये रेगुलरली आने लगे ओटीटी पे, तो वो जो स्टारडम है ना, जो लोग स्टार को देखने जाते थे बड़े पर्दे पे, वो खत्म हो जाएगा। ये क्या बस यू हैव बीन, ये आपको लगता है तुषार? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं मानता हूँ, क्योंकि आजकल लोग, मतलब टाइम्स हैव चेंज्ड अ लॉट, एंड ऐसा तो आप कहते हो तो उसका मतलब अगर जिस स्टार की 2 साल तक कोई फिल्म नहीं आई या 1 साल तक कोई फिल्म नहीं आई, उसका स्टारडम खत्म थोड़ी हो जाता है। बिकॉज वो डिवाइड है कि पीपल इज लाइक, अभी स्टार वो एक्सेस नहीं था, अगर स्टार को देखना था तो सिर्फ थिएटर में जा सकते थे। नहीं, पर वो एक टेम्परेरीली, अगर कोई स्टार, कभी-कभी आजकल हमारे स्टार्स एंकरिंग, मतलब दे कम एज जजेस ऑन रियलिटी शोज, दे कम एज दे होस्ट स्टेज शो, और दे डांस ऑन स्टेज शोज। तो ऐसा नहीं सोचती ऑडियंस की अभी तो फिल्म फेयर में हम देखते हैं उनको टीवी पे, या फिर किसी अवार्ड फंक्शन में देखते हैं टीवी पे, अब हम उनकी फिल्म में नहीं देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतने एक्सेसिबल हो गए। वो एक सर्टेन टेम्परेरी सिचुएशन होता है जहां आई थिंक एक फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है लोगों में कि we will watch our stars, you know, in different platforms, on different means of communication, and then when our favorite films come, we will watch them in the theater also. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो आपका इतने सालों का काम है वो लोग एक छोटे से टाइम पीरियड की वजह से भूल जाएंगे। I don't believe that. I believe कि if people love you, they love you for your work, and whether your work is on TV or whether your work is on the OTT platform, that will be loved there also. And then when your movies are back to the cinemas, you know, when the big films come back to the cinemas, they will come back in even bigger numbers, क्योंकि वो एक वेट हो जाता है, एक मतलब कि एक इंतजार रहता है, एक भूख रहती है, और वो टूट पड़ेंगे जब, मेरे को लगता है जब इवेंचुअली जब थिएटर्स खुलेंगे पूरी तरह, जब पूरा नॉर्मल हो जाएगा, इट विल बी अ ह्यूज कमबैक फॉर द सिनेमा ऑडियंसेस ओके एंड द स्टार्स। अच्छा, तुषार, स्पीकिंग अबाउट यू, व्हेन डिड यू डिस्कवर कि आपके अंदर वो कॉमिक टाइमिंग है, वो एक अच्छी कॉमिक टैलेंट है? बिकॉज इट्स नॉट गोलमाल, ढोल में भी आपका अच्छा कॉमेडी रहा है, क्या कूल है हम, खास करके फर्स्ट पार्ट मुझे काफी अच्छी लगती है, क्या कूल है आपका फर्स्ट पार्ट, उसमें भी आपका कॉमिक टाइमिंग रितेश के साथ जुगलबंदी बहुत अच्छी थी। व्हेन डिड यू डिस्कवर दैट कि ये है कॉमिक टाइमिंग वाली चीज? आई थिंक फर्स्ट क्या कूल करने के टाइम थोड़ा बहुत ऐसा लगा, खाकी करने के टाइम ऑल्सो, इवन ड्यूरिंग खाकी जो सर अक्षय सर में जो सीन्स थे, राजी उसमें एक सटल कॉमिक टच डालते थे, यू नो, बिकॉज ही वाज ऑलवेज kind of overpowering me as a senior cop, and I was a very young cop in that film. So Raji used to always add that little tutu meme between us,
which was a little funny also. Yes. तो वहाँ थोड़ी झलक मुझे ऐसे लगा कि शायद थोड़ा पोकर फेस कॉमेडी कर सकूंगा मैं. फिर क्या कूल है हम की तो बहुत गालियां पड़ी कुछ मेरे डायरेक्टरों से कि आपने क्यों ऐसी फिल्म की. पर मुझे थोड़ा ऐसा लगा जैसे कि ये भी एक जॉनर है जो मैं कर सकता हूँ. Then of course I really began to realize that okay, I'm beginning to find a niche for myself. Was after the Golmaal series started, and then I did Dhol and 1, 2, 3 also. So in that Golmaal Dhol 1, 2, 3 phase, I realized that okay, this is an area where I can do good work, and people really like to watch me doing these comedies. And though I can do other genres also, इसमें शायद एक branding बन सकती है मेरी. So I think it started with Golmaal 1 in a big way, but उससे पहले भी खाकी और क्या कूल में थोड़ा बहुत ऐसा लगने लगा था. Yes, खास करके आप जब अक्षय सर को बोलते हैं खाकी में, वो भी तो कार्डबोर्ड टारगेट है, पलट के बाहर नहीं करेगा. I remember वो सटल कॉमेडी था जब अतुल कुलकर्णी को मार के बाहर निकले. Yes. Yeah. So जब उनको जवाब देना है, back answer him, and Yes. I give him, and then he's just like, उनकी भी I think एक comic streak शुरू होने लगी थी with खाकी. Yeah. And then it went full on with मुझसे शादी करोगी and all the other films, but there was a slight comic touch in Khakee which people really liked. Correct. अच्छा तुषार, ये लास्ट सवाल है and frankly मुझे आपसे ये पूछना पड़ेगा because as somebody who has also grown up watching you, मुझे कुछ कहना. मुझे याद है सिंगल स्क्रीन में हम उस टाइम मल्टीप्लेक्सेस थे भी नहीं. मैं पठान में वे आई स्टे उस टाइम पे तो नहीं थे. आई वेंट आई सॉ. मुझे कुछ कहना है, लगान और गदर को टक्कर देने वाली फिल्म थी वो. ये yes, छोटी बात नहीं. Not at all. And at that time ऐसा नहीं था कि 1-2 हफ्ते में पूरा आपका बिजनेस निकल जाता था. It should take time. Yes. And then after it released and after 3 weeks it came on 25th May and June 15th was Lagan and Gadar. Yes. तो मैं आज सोचता हूँ कि अगर लगान या उनमें से एक भी फिल्म अगर नहीं होती, लगान या गदर, खासकर गदर और भी बड़ी हिट होती. But it still continued to run after Lagan and Gadar came out, and I'm thankful to you guys, the audiences and the media and everybody who that was I think one film where a lot of the elitist media also liked, and the commercial media also liked. So across the board people had given minimum 3 stars, 2.5, 3 stars. There were few reviews that were probably not very favorable, but the youngsters all over the country, especially in small towns, really liked the film. And I think they were the ones who went to watch it again and again. That's why it continued to run. But very pehli film, I think Metro में 25 or 30 weeks, Metro में I think 30 weeks, 25 weeks चली थी. So I was very happy. उस time multiplexes थे नहीं. And I remember when I was growing up, Chandni had run for 50 weeks or 75 weeks in Metro, and for me it was a big thing कि Metro में आपकी film लग रही है. जब मैं poster देखता था Metro में, I used to feel very, very happy because there's a huge poster in Metro. Yes. And मैं याद है 89 में I went to Chandni released in Metro, and when I went to see Batman in Regal in 1990, 1 year later, I got to see Batman. The first part had come out. So on the way to Regal, you pass Metro. So I remember Chandni का poster उस वक्त भी लगा हुआ था उस time पे. So I had that stayed in my mind that okay, Metro में picture लगनी ही चाहिए. वो अच्छी है. So क्या पूछना था मुझे पूछा because it is आपने कहा था मैं उस वक्त अगर क्रिटिक होता मैं तो 4 स्टार दे देता था. आप मुझे कुछ कहना है तो. But मुझे जो पूछना है कि ये आपकी करियर is doing quite good, and you had a share of ups and downs. It's a fact, most actors do. But you had a lot of memorable films. और क्यों memorable क्योंकि लोग आज भी टीवी पे देखते हैं दोबारा. जैसे जितेंद्र साहब की फिल्में देखते हैं, वो फिल्में भी लोग देखते हैं, अपनी फैमिली के साथ देखते हैं. So how does it feel? Because as a fan, as somebody who's admired you also, I feel it is a little hurtful कि लोग जब भी ये बातें होती है insiders, outsiders, लोग बोलते हैं कि हाँ insiders भी नहीं चलते. लोग कभी कभार तुषार कपूर का एग्जांपल देते हैं. And I have had arguments with those people. कि that's not correct. तुषार कपूर की पहली फिल्म बड़ी हिट है, खाकी है, ढोल है, गोलमाल है. So why is it that people always, does it hurt you also, Tushar, as somebody who has worked? Initially, I used to get a little sensitive about it because maybe I was younger then. So in my 20s, I used to get a little sensitive कि अरे मैं तो मतलब I became an assistant director, and then Vashu Bhagnani launched me, and I was not even launched by my family. So I have started on my own, and the first film did very well. And then most of the films like the Golmaal series and all that I have done are not home productions.
Yeah, really. yeah, So what I'm known for is basically our films that are self-achieved, yeah, roles that are self-achieved, and so why do I have to prove myself, even though my track record has been quite independent all along the way? बट उसका आई बिलीव कि कुछ कर नहीं सकते, एंड जो आपकी ऑडियंस है वो जानती है कि आपका काम क्या है. सो इट्स आई थिंक आई अर्ज अदर एक्टर्स आल्सो नॉट टू start believing everything that is said about you, because it's okay if you are a star son and people, a section of people maybe they feel that in the case of a star son the glass is always half empty, and if you're not from the film industry, then no matter what you do the glass is half full. true. So that disparity to hoga hi hoga, lekin in the bigger picture you always get your due. I look at it positively, and वरना हम हर चीज को मतलब seriously लेकर, I mean आप कैसे काम करोगे? So you have to it's very important. I saw some interview of Karina's also recently. She said that it's just important, just keep digging your head in the sand and just keep working. That is the only way. तो जो कभी कुछ अच्छा बोलेंगे, कभी कुछ अच्छा नहीं बोलेंगे, take both in your stride. Okay. Finally, before signing off, सिम्बा में आप लोग ने ऐसा किया था, फाइनली तब आने वाली है गोलमाल 5? क्या Golmaal, there was an announcement in 2019, एक साल पहले, but I think now with the COVID situation, timelines have gone a little ऊपर नीचे. तो I think Rohit will be able to answer that question. बनेगी तो जरूर, उतना गारंटी देता हूँ मैं. वो तो मतलब कोई भी गारंटी दे सकता है, लेकिन कब बनेगी ये पता नहीं है. और थिएटर में ही आनी चाहिए. यस, थिएटर में ही आनी चाहिए ऑफ कोर्स. फिर बाद में टीवी पे भी देखना, लेकिन घर पे. जी जी बिल्कुल. अभी गोलमाल का पूरा डीवीडी बॉक्स सेट है मेरे पास. लेकिन इस बार लक्ष्मी बॉम्ब मतलब वो पटाखे खेलना भूलना मत. Definitely, definitely. Yeah. Wonderful talking to you, Tushar. It was such a pleasure. Same here, Russell. And like you said, keep digging, keep up the good work. Cannot wait to see Laxmmi Bomb. Everybody, Laxmmi Bomb is the Diwali dhamaka. Don't forget to catch it on the first day it comes on Hotstar.